Hi, good evening. Today we'll be dealing with the salient features of the Indian Constitution. First of all, features जानिए आगुरु we have to understand what is the Constitution. तो Constitution विषय कौन कौन किए जानी चाहती किसी idea है चलने के इटा on spot चलो ओह अच्छा अच्छा ओके sorry so Constitution कौन है पान तक लगे उसी एमिति क्या पान तक लगे अच्छा एमिति Oh, without it. Okay, okay. Sorry, sorry. Thank you. ठीक है जी हाँ 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 ओके सॉरी हाँ हाँ सो कॉन्स्टिट्यूशन का आगे बुझिया इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट जोटा है हमारा salient features constitution most important it has most important thing that it does is it sets law sorry it sets the basic rules and regulations by which a country is to be governed. Is to be governed. That is the primary function of the constitution. It sets the basic rules and regulations by which a country is to be governed. Okay, that is one aspect. Second aspect, kono? It establishes the basic or fundamental organs of the state. Now, state will deal properly under Article 12, but to give you a basic idea, Article 12 that deals with the state refers to the government and its agencies like the executive, legislature, judiciary, and its agencies that fall under the purview of the definition of state. Okay, so it establishes the basic or fundamental organs of the state. Now, you have to understand ଆମର बेसिक ऑर्गन्स गुड़ा किए तमरो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव and judiciary. Okay, these are the three fundamental organs of the state. Legislature is tasked with making laws. Legislature amara दी टाइप रो लेजिस्लेचर अछि गोटे हैला सेंटर रे which is represented by the parliament of India. Then you have legislature in the states which is represented by the state legislatures or Vidhan Sabha. Okay, so तांको कामटा मेन कोन laws बनेइबा. Okay, then we come to executive. What is the work of the executive? Implementation. Law बना हेगला law भितरे law रो गोटे framework बनिगला तमे गोटे भाबो गोटे human body is what? A skeleton and flesh. Now the skeleton is the framework of the human body. So the skeleton is made by the legislature. Okay, executive जो laws गुड़ा legislature बनेइला ताकू फुनी on ground implement भी तो करियार अछि ताकू खाली तो law form रे हमें पढी दबानी ताकू implement करिया पई तो बनाउ छुको. Now body भीतर भाबो बनै देला skeleton के बनै देला legislature. Executive infuses blood and flesh in that skeleton. Human केतोळे बनिबो. So implementation is done by the executive organ of the state. Executive को जेंति legislature represent करे center रे parliament और state से state legislative assembly.
Similarly executive को की represent करे center रे? It is the prime minister and his council of ministers. You can include the president also. Okay, prime minister and the council of ministers plus the president. Similarly state रे की होबो एटा गोटे हिंट दे देली. Exactly, CM है. So CM and his council of ministers plus the president, governor. Yes, very good. Okay, this is a basic about executive. Now you have the judiciary. Judiciary काम कौन? ये law बनेला legislature गला ता पाखु implementation by executive implements the laws. Then you have interpretation. Okay, interpretation माने जो laws बनिला जो लॉ लेजिस्लेचर रे बनिला तापर एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट कला वेदर दे आर इन हार्मनी विथ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना. तुमको देखिया को पड़िबो ना हमर कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिफाइंड द रोल्स ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट इन अ वेरी कोहेरेंट मैनर. तुमरो लेजिस्लेचर आगे इनिशियल कोड होला स्टार्ट कोड इनिशिएट होला लेजिस्लेचर लॉ बनला लॉ ता ता अप्रूवल सॉरी ता लॉ ता को इंप्लीमेंट के करिवो एग्जीक्यूटिव. Now এই जो law টা বনিলা এই stage रे and executive रे stage रे जोटी implementation हैला. Now we have to ensure that it is in harmony or in consonance with the provisions of the constitution because constitution is the supreme law of the land. Okay, why is it called the supreme law of the land? Because all laws in the country IPC ho, IPC though of course it has been replaced by the Bharatiya Nyaya Samhita. All these laws, whatever laws that we have in our country, they derive their legitimacy from the Constitution of India. है ना तांकर जो ये माने जो legitimacy credibility कि से माने Constitution principle संगरे align करूछंती सेटा किए दबो ताकू जो तांकर legitimacy, it is the Constitution. Therefore, all laws are subservient. माने सबू laws have to align with the principles of the Constitution. Okay. So hence it is known as the supreme law of the land. So therefore, this supreme law of the land has defined this arrangement. Where the legislative makes laws, executive implements laws, and the judiciary interprets the laws. कि law बड़ा constitution संगरे match करूची कि नहीं ता principles संगरे aligned है कि नहीं. है. This is one aspect. Okay, constitutional data aspect देखिए. And what is the third aspect? Third is it defines the interrelationship. Defines the interrelationship between different organs. Organ established तो है गला. ता function भी हमें जानी गले. बट आंको भितर किछि रिलेशंस भी अछि ना जेमति लेजिस्लेचर तमे आमे देनछु व्हेन वी आमे आगु जेतले पढिबा जेत पार्लियामेंट ओ डिटेल ले पढिबा you will come across an important article 75. What does article 75 talk about? Okay, idea is article 75 what a fundamental principle of democracy lay down करे कौन lay down करे the Council of Ministers is collectively responsible to the House of People or what is it? House of People कौन बोलती लोकसभा. House of People Parliament रे हमर दीटा chambers अछि. Total House of People known as the Lok Sabha, House of States known as the Rajya Sabha. Okay, so House of People is the Lok Sabha. कहीं ना लोक सभा रे डायरेक्ट ये होची ना इलेक्शंस होची आमे जो हमरा एकरा जो 2024 जो इलेक्शन कला ओडिसा रे दीटा इलेक्शन हैला. गोटे थिला हमर स्टेट इलेक्शंस जोतरे बीजेपी जीती की
they formed the government. Mohan Maji became the chief minister. Then we had the general elections. Now general elections ta kono? This election is held. This election is held to elect members to the Lok Sabha. Lok Sabha is the house of the people. Law ta jetale bonne ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆମର ବହୁତ ତିନିଟା ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଅଛି ଏଟା ସବୁ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ତିନିଟା ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଅଛି ଆମର ତିନିଟା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଶୁଣିଥିବ ସମସ୍ତେ ସୋ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଦ ability the competence to make laws on those subjects କିଏ law ବନେଇ ପାରିବ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ यूनियन लेजिस्लेचर मु कौन कहली आगे लॉ बनेयार का पारे पावर ना बाउंसर जाउची तो बेसी ये जाउनी तो आउतरे बुझेबी किछि बुझी पड़छ समस्त बेसिक हमें आगे बुझिले लेजिस्लेचर काम ना लॉ बने हला दी टाइप र लेजिस्लेचर अछि गोटे सेंट्रल लेवल ले हला पार्लियामेंट आ गोटे स्टेट लेवल ले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नाउ सेंट्रल लेवल जो पार्लियामेंट अछि यूनियन लेजिस्लेचर को ऊपर लॉज बने परियो तो ऊपर क्वेश्चन आसीबो कि यूनियन लेजिस्लेचर माने पार्लियामेंट कहा ऊपर लॉ बने परियो तो कहाँ पर लॉ बने पारी इट कैन मेक लॉज ओनली ऑन सब्जेक्ट्स which are mentioned in the sorry which are mentioned in the union list है then you have the state list जेमिति यूनियन लिस्ट रे जो सब्जेक्ट्स अछि सब्जेक्ट्स जेमिति कोन हे गला तमर सॉरी एक्सटर्नल अफेयर्स डिफेंस है करेंसी etc these are all union subjects है एगुड़ा सब यूनियन आ ऊपरे खाली लॉ किए बनै परिबो ओनली द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज नॉट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली केबे देखिछ हमर एठी विधानसभा रे केबे डिफेंस ऊपरे लॉ बनिछ है सो इट इज द प्रेरोगेटिव or it is the right of the union list to make laws mentioned in the sorry it is the prerogative of the union mane parliament to make laws on the subjects which are mentioned in the union list है similarly state list रे कोन land law and order है these are examples of state subjects land ऊपर हे गला agriculture हे गला law and order हे गला आ ऊपर law की बनी परियो स्टेट बने तमर गोटे माइंड रे आसुओ अरे 2020 रे पार्लियामेंट गोटे लॉ बनैतिला एग्रीकल्चर फार्मर्स लॉ बनैतिला सेटा केमति बनैतिले दे कैन मेक लॉज बट दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट केना सेटा स्टेट सब्जेक्ट ना स्टेट कहबो एटा हम सब्जेक्ट तमे केमति लॉ बनै दी परिबो लॉ ए माने बनै परिबे बट इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट लिस्ट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस वेयर द यूनियन कैन मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स बट सेटा हमें आ गोटे चैप्टर रे डिस्कस करबा हमें खाली बेसिक जिनसो गुड़ा देखुछु कॉन्स्टिट्यूशन है सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रथम जिनस आमे देखिले कि इट सेट्स द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है सेकंड तमर कोड गला जो हां इट एस्टैब्लिशेस द देखि दिया नंबरिंग कर दी एस्टैब्लिशेस द बेसिक और फंडामेंटल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट जोटा आमे देखिले एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशियरी देन थर्ड जिनस आमे कोन देखिले इट डिफाइन्स द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स अच्छा एटा मु कहउतली मु से कहली एटा कहियार मानेटा एटा इंटर रिलेशनशिप माने हम तीनटा ऑर्गन्स देखिले तांको भीतर रिलेशन केमति रहउछ आम कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्राफ्टेड इन सच अ मैनर where there is separation of powers on one hand but there is no true separation of powers काई separation of powers माने कोन लेजिस्लेचर को ता कामटा दिया हिच वर्ड रो बुझो किछि बसिया दरकार लेजिस्लेचर काम दिया हिच ता पावर टा कोन दिया हिच मेकिंग लॉस एग्जीक्यूटिव रो काम कोन दिया हिच इंप्लीमेंटेशन आ जुडिशियल काम कोन छि इंटरप्रिटेशन देखि कॉन्स्टिट्यूशन सा रोच कि एटा हला तक सेपरेशन ऑफ पावर्स बट देयर आर सिचुएशंस where legislature keeps a check on the executive judiciary गोटे चेक रखियो सॉरी लेजिस्लेचर गोटे चेक रखियो जुडिशियरी ऊपर वैसे वर्षा जुडिशियरी गोटे लेजिस्लेचर ऊपर भी चेक रखियो जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव ऊपर भी चेक रखियो तम भाबो गोटे क्लास अछि हला तमर क्लास रे तमर दीटा टीचर अछन हला तमे आ गोटे प्रिंसिपल अछि नाउ जे टीचर धर को मु तुम माने स्टूडेंट्स अच्छो समस्त तो स्टूडेंट्स ऊपर मोर कोन मु डेली तुम क्लास पढ़ाया पे आसिल
ମୁଁ तुमको समस्त गोटे क्लास वर्क देली नेक्स्ट क्लास रे आई एक्सपेक्ट कि तुम सेटा करके आस्थिबो होमवर्क टाइप रो देली तुम आई एक्सपेक्ट तुम करके आस्थिबो तुम नेक्स्ट क्लास रे कलनी सेटा जे कला ठीक अछि बट जे न कला ताको ऑब्वियसली आई विल स्कोल्ड मु कहबी भाई काई कलनी तुम कोन पे कलनी एटा तुम अफेक्ट करिवो तुम मार्क्स मु आई केप्ट अ चेक ऑन द स्टूडेंट्स नाउ एथर मु क्लास रे कोन हेली मु तुम जो होमवर्क देली जो पिला कलेनी मु तो छिडा कली ह्यूमिलिएट कली मु कहली कोन पे करूना तुम एटी लायक नुहे तुम आसियार कोन पे एटी क्लास आस जाओ एटू तुम मो क्लास रे आसीबो नाउ दिस इज टू हार्श से पिलाटा ऑब्वियसली ह्यूमिलिएट हला समस्त सामने ताको खराब लागिला सी जाई कि प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर को कहला प्रिंसिपल सर देखो तो मु आजिटा मोर गोटे रीजन दिला बट सर बुझिलेनी मु सर मु कहली कि सर बुझिलेनी एमिति कहले मते बहुत खराब लागिला सर कोन मु करिवि सो प्रिंसिपल मते डाकिबे रूम को कहबे सेमिति दैट वाज नॉट जस्टिफाइड तबे से स्टूडेंट संग सेमिति कथा हबा कथा नहीं जहाँ भी स्टूडेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि तांकर किछि हेई पारे तांकर किछि दरकार ये थई पारे एक्सक्यूज थई पारे कोन सेई दिन कोन प्रॉब्लम हेई यू हैव टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग सो इथरे कोन हैला तम बुझिलो नाउ आई वाज द लेजिस्लेचर हैला नहीं सॉरी लेजिस्लेचर स्टूडेंट्स तम ऊपर चेक मु रखिली आई एम एग्जीक्यूटिव मु तम ऊपर चेक रखिली नाउ जुडिशियरी इज द प्रिंसिपल जुडिशियरी मो ऊपर चेक रख सो ए जो सिस्टम टा अछि दिस सिस्टम इज नोन एज दिस डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस गोटे ऑर्गन को इतने पावर दिया ही जाएगी कि सी सर्वस्व हो जाए दैट इज नॉट द केस दैट इज नॉट हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिजाइन ओके सेइत पई तमे देखिबो जो लॉ टा बनिबो एग्जीक्यूटिव जोटा लॉ टा इंप्लीमेंट करिवो ताको जुडिशियरी थ्रू चेक करिया को पड़िबो जुडिशियरी तो चेक करिवो एटा जदि ठीक अछि जदि एटा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल संगे वैलिड अछि हार्मनी रे अछि देन ओनली दैट लॉ विल बी एक्सेप्ट बुझि पाले कि तो जुडिशियरी कीप्स अ चेक ऑन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ओके लेजिस्लेचर कीप्स अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव हाउ ना लेजिस्लेचर तमे एटा हम जो पढ़ले आर्टिकल 75 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स is collectively responsible to the house of people माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर मन इच्छा करि परिबेनी से माने जवाब देही का को जवाब देही टू द हाउस ऑफ पीपल और द लोकसभा तांको आमे इलेक्ट करछु तो नेचुरली आमे तो इलेक्ट काई करछु आमे जो हमरो अछंती भुवनेश्वर रु अपराजिता षडंगी आमे तो काई इलेक्ट करछु कि तमे भुवनेश्वर रो कथा उठैबो कोठी पार्लियामेंट आमो बिहाफ रे आमर तो एटा ऑब्वियसली फिजिबल नुए ना आमे कोटी कोटी लोक आमे समस्त एई पार्लियामेंट ल तो बनी परिबे सो वी हैव अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन तक इनडायरेक्टली आमे इलेक्ट कलु कि देखो अपराजिता षडंगी आमे तम ऊपरे मैडम आमे तम ऊपरे वी रिपोज आवर फेथ तमे आमो बिहाफ रे भुवनेश्वर रो कथा जाई कि पार्लियामेंट रे उठा हगी ना एटा तो बुझिचो एटा जिंसटा सो जेतोबळे सीए जेतोळे सपोज शी बिकम्स अ मिनिस्टर टुमारो सी मन इच्छा काम करि परिबो ताकू लेजिस्लेचर थ्रू इट्स वेरियस डिवाइसेस दे विल क्वेश्चन हर कि कौन काम हेछि क्वेश्चन आर रे ऑपोजिशन रो लोक उठी की पचारिबे कि बीजेपी गवर्नमेंट रो भी लोक के जदि जे इंटरेस्टेड थिबो इंडिपेंडेंट मेंबर ताकू क्वेश्चन कर परिबो अपराजिता मैडम मते कोंतु भुवनेश्वर रे केते डेवलपमेंटल वर्क हैला जो गोटे तमर रिंग रोड बनियार थिला गोटे एग्जांपल दोछ खाली गोटे रिंग रोड बनियार थिला केते तार ये हैला केते दूर गला से जिंस भुवनेश्वर पई एथर केते एलोकेशन हेछि फ्रॉम द स्टेट बजट what are the projects that were lagging माने जोडा ये रे थिला लैग करथुला जोडा हेई नथिला प्रीवियस गवर्नमेंट अंडर सेटा केते तार माने केते प्रोसीड कला से इनसटा एटसेट्रा हैला सो दिस वे द लेजिस्लेचर कीप्स अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव अगे ना सो दिस checks and balances system is defined by the constitution से it defines the interrelationship between different organs तीन सब organ भीतर relationship बतैली मु केमिति किए काकू चेक करे तीनटा जिंस हे गला हैला एटा रब करछु मु ओके स्पेस पे सॉरी
ये सरला हमर. Now we come to the fourth aspect. Fourth टा कोन? Relationship between different organs हे गला. Now it also defines the relationship between the citizens and the state. है एटा तो डिफरेंट ऑर्गन्स किंतु तमे जो जिंस गुड़ा करूच लॉ बनैबा लॉ को इम्प्लीमेंट करवा लॉज को इंटरप्रेट करवा का पई गोटे थिबो तो ना किए आम सिटीजन्स सो इट इज इम्पोर्टेंट कि सिटीजन्स आउ गवर्नमेंट which is represented the state which the government which represents the state तांको भीतर रिलेशनशिप केमिति को भी डिफाइन करिया हैला सो हेंस हमरो आम पई फंडामेंटल राइट्स अछि आउ फंडामेंटल ड्यूटीज अछि सिमिलरली स्टेट पई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आमर गोटे गोटे कांसेप्ट अछि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी व्हाट इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी केबे घोषिबनी जहा पड़िबो सेटा सब गोटे वर्ड को ब्रेक डाउन करिवो हला तमे खाइया एतले खाउछ सेटा कोन होछ तमे को एकादरे खाइ दउछ जदि एकादरे भी खाइ दबो सेटा ठीक रे ये हबो डाइजेस्ट हबो तमे कोन करछ तमे च्यू करूछ छोट 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 बाइट्स करके ताकू तापरे रखुछ तापरे से तो कोन कोछि बॉडी सेति की बाइट्स को ताटू न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करूछ तो सिमिलरली जतोड़ तमे गोटे को भी गोटे नुवा टॉपिक की गोटे नुवा कांसेप्ट देखिबो always try to break down the words social contract घोषिया दरकार नहीं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कौन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कॉन्ट्रैक्ट माने बुझछो अग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल तमे भाबो गोटे तमे किनिलो इंश्योरेंस टे किनिलो हेल्थ इंश्योरेंस हैला यू परचेज्ड हेल्थ इंश्योरेंस नाउ एचआई लिखि दउची हेल्थ इंश्योरेंस हैला नाउ यू आर एक्स हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर सपोज तमरो ये हे गला धर को वो भी गोटे हेल्थ इंश्योरेंस दे वो कंपनी गोटे कोइ रिलायंस हे गला रिलायंस है हैला रिलायंस कौन सा ना अर्गो रिलायंस अर्गो ना कोन ने सेरा एचडीएफसी और रिलायंस रो तमे हे गला गोटे एग्जांपल कर रिलायंस तुमको कोन कहला आमे तुमको हेल्थ इंश्योरेंस दबो फॉर दिस मच रुपीस हैला रुपीस धर को 50000 एति की प्रीमियम आमे नबु तुमको हैला एक्स कहला ओके ठीक अछि किंतु अग्रीमेंट रे कोन थिला अग्रीमेंट रे कहला कि आमे हमर हेल्थ कवरेज खाली ए बी सी पाई हैला तमरो डायबिटीज डीटा डी फॉर डायबिटीज लिख दो डायबिटीज ता कवर्ड नाही हैला नाउ ए लोकटा को डायबिटीज हे गला से करि परिबो कि आठू क्लेम करि परिबो काई करि परिबो एना ऑलरेडी तमरो जो अग्रीमेंट थिला ता अंडर तमरो ऑब्लिगेशन कोन कि यू आर कवर्ड अंडर ओनली ए बी सी डिजीजेस नॉट डी डी इज डायबिटीज तमको डायबिटीज ता हैला तो नेचुरली एटा कवरेज दबनी होगी ना तो सिमिलरली हमर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ता भी सेया तमरो जतो बडे सोशल कॉन्ट्रैक्ट रे हमर कोन होची एटा हला सोशल कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट जोटा भी तो लिखि परिबो on one hand you have the state mane government and its agencies on one hand you have the citizens है ना कॉन्ट्रैक्ट हिसाब रे कोन ये होची स्टेट कहला कि तमे जति सिटीजन्स आमको जति रिस्पेक्ट करिवो आमको जति ओबे माने आमको ओबे माने हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन तापरे जो जति की नेशनल सिंबल्स
आउ जदि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखिबो देन इन एक्सचेंज आमे तुमको कौन दबु तुमको आमे दबु फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स हला तुमको राइट्स दबु आ तुम सिटीजनशिप मिलिबो तुम सिटीजन्स कहले ठीक अछि आमे सेटा करिबु स्टेट कहले तमर खाली एतिकी जिंस नुहे यू आल्सो हैव टू obey some fundamental duties you also have to follow some fundamental duties so eta gote give and take relationship jemti agreement gote give and take relationship tome kono paisa delo si tumu health insurance dela tome agree kolo ki na na ei disease goda covered nai se sei hisab re तुमको तारा माने ये सेट कला कौन सेटा जो कौन टा कहली ए जो प्रीमियम टा से तुमको ये कला हैला सो सेमिति एग्जैक्टली गोटे कॉन्ट्रैक्ट हेची कहा भितरे गवर्नमेंट भितरे और सिटीजन्स भितरे एटा गोटे फिलोसॉफिकल कांसेप्ट एटा रियल ले की गवर्नमेंट साइन करनी हमसे एग्रीमेंट एटा फिलोसॉफिकल कांसेप्ट स्टेट कोन कला सिटीजन्स को कहला कि देखो आमे तुमको सिटीजन रो मान्यता दबु और फंडामेंटल राइट्स रो और तुमको राइट्स भी तुम प्रोवाइड करियो बट इन ऑर्डर टू एंजॉय दीस राइट्स you have to obey the fundamental duties laid down by the constitution and tamara kon ta you have to respect the national symbols so this give and take relation is the social contract so eta kiye define korchi is defined by the constitution of India it is the relationship between the citizens and the state बुझी गलो चारटा important जिंस constitution हमर major जिंस हम देखि देले it is the supreme law of the land all laws are subordinate to the constitution of India सबू law constitution under जाए second जिंस जो basic rules and regulations to govern the country केमिति गोटे country चलीबो कोनटा हम form of government हबो all this is defined by the constitution second aspect हमें देखिले major तीनटा जो organs अछि हमर of the state executive legislature executive judiciary देखिले ता roles गुडा कोन law making legislature रे executive रो implementation and judiciary रो interpretation third aspect हमें देखिले जो inter relationship between the different organs of the state सेटा हमें देखिले केमिति how each organ keeps a check on the other organ तांका भीतर relationship केमिति we saw that and lastly we saw how the constitution defines the relationship between the citizens and the state हैला किछि आउ डाउट्स कार तो एटा बुझिया इंपोर्टेंट एथ पई बिकॉज़ आमे नेक्स्ट पार्ट टा बुझिया पई वी हैव टू अंडरस्टैंड हम जो कॉन्स्टिट्यूशन हम देखिले जोटा व्हिच इज द टॉपिक ऑफ द क्लास टुडे एटा हला हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जेत्ति की आमे सब देखिलु जो चारटा जिंस देखिले आमे हला कि डेफिनेटली माने बेसिक सेट्स द बेसिक लॉज एंड रूल्स ऑफ हाउ टू गवर्न द कंट्री relationship between different organs of the state establishment organs of the state and relationship between citizens and the state all these are encapsulated in the features of the constitution एगुडा सबू constitution ने तांको articles form रे provided अछि हैला now we look at some of the salient features of the constitution salient features माने पूरा important features of our constitution we start with the length of the constitution our constitution ta को बहुत lengthy कोन why do we call it lengthy right but what is the sorry correct absolutely correct correct okay very good so originally we had originally there were 395 articles and 8 schedules जेतले constitution first time बनी थिला 1950 रे तोला adopt हैला 26 January 1950 को तोले enforce हैला sorry 26 January को तोले enforce हैला सेतबळे you had 395 articles and 8 schedules but currently we have as you said correctly we have more than 470 articles and 12 schedules very good hala 4 schedules were added over a period of time hala
So prathama amar tame dekhucha the size of the constitution is huge. We have a gargantuan constitution, but बहुत ही बड़ा lengthy written constitution. ताकू आमे different reasons कहि परिबा. What are the reasons for this length? प्रथम हैला your geographical factors. हैला. Now geography. Okay. First, geographical factors. हैला. First factor कहीं की इतने बड़ा कहीं की lengthy कहीं की geographical factors. कौन टा? आमर कॉन्स्टिट्यूशन इज वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन आमर यूएस भलिया नुहे कि स्टेट में अलग कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री में अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं वी हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन नाउ दिस सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन caters to all the states the entire territory of India naturally तमर एइबडा एपर्यंत तमे देखतुरा 2019 बोते थोड़ा कश्मीर पे भी थिला से तोर तापे गोटे स्पेशल स्टेटस वाला जो आर्टिकल 370 थिला जोटा व्हिच ग्रांटेड अ स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर तो एथरो तमे देखि पड़छ स्टेट्स फाइ भी you had different provisions then you all the provisions apply to all the states of the country the entire territory of India so naturally the size bodo so one is your geographical factor jota because it caters to the entire territory of India है the constitution second historical factors historical factors कौन तमे देखिबो हमर कॉन्स्टिट्यूशन हम एटा कहबा भी पुणी वेरियस सोर्सेस जतले हमें आसीबा नेक्स्ट पॉइंट को सेठी भी देखिबा कि जतबेले व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग ड्राफ्टेड वी हैड डिफरेंट इंस्पिरेशंस गोटे कोन ब्रिटिश इंस्पिरेशन आ गोटे अदर कॉन्स्टिट्यूशंस है ना आमे 200 वर्ष ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर रही तो naturally तमे देखिबो जतबेले व्हेन यू रीड अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रे कोन होची हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तमे देखिबो 17 एक कोन तमे एमिति गला तोळु पासे एटा एमिति पॉइंट ना सॉरी छंदी की हां केमति करी अच्छा थैंक यू अच्छा एटा जो आमे जो ब्रिटिश रू नेलु आमे 200 इयर्स ब्रिटिश रूल अंडर थी 1773 रे रेगुलेटिंग एक्ट रू आरंभ हैला जोटा सेबेटू ब्रिटिश हैज बीन डिजाइनिंग लॉज फॉर द कंट्री है ना तमर तीनटा मेजर तो हिस्ट्री रे तम पढी दिबो तीनटा बैटल्स व्हिच डिसाइडेड द फेट ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया जोटा हला तमरा प्लासी 1757 1761 was a battle of Wandiwash and 1764 was the battle of Buxar है ना three battles that solidified the British possessions in India, the British rule in India, जोटा ब्रिटिश को firmly कंसोल्ट में इंडिया रे सेटल करे तापर ब्रिटिश माने को भाबिले कहले माने एमिति कोन रहउछन इंडियंस माने हमको जदि हमको गवर्न करियर अछि वी हैव टू ड्राफ्ट सर्टेन लॉज तो रेगुलेटिंग एक्ट हे गला तापर तमर पिट्स इंडिया एक्ट हे गला हैला एटा कोन यूज करब हैला पिट्स इंडिया एक्ट हे गला पिट्स इंडिया एक्ट then your ये what about it Indian Councils Act sorry Indian Councils Commission Charter Act पढ़िबो हम तळे सेटा पढ़िबा
ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଟାକୁ डिटेल ରେ पढिबा जस्ट एटा खाली तम रेफरेंस पे कहूँ चार्टर एक्ट्स गुडा 1813 33 53 then you had the government of India act 1858 Indian councils act 1861 1909 1919 then you had the government of India act 1935 and finally Indian independence act 1947 post which our constitution was drafted in 1949 and enforced in 1950 okay एटा हमरो टोटल पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन बनला पर्यंत तो तमे देखो एथि केते इन्फ्लुएंस कार रोच ब्रिटिश गवर्नमेंट एति की लॉज बनेला ता भितरु वेरियस प्रोविजंस वी हैव अडॉप्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रे प्रथम थर फेडरलिज्म कथा हैला हैला 19 ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1919 सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 रे कोन हैला तमरो बाइकैमरलिज्म जोटा आज हमें देखुछु राज्यसभा और लोकसभा बाइकैमरलिज्म कथा हैला सो देयर वर डिफरेंट provisions different features which were borrowed from the British rules and British laws है ना so therefore गोटे aspect हम एटा देखि देले ब्रिटिश कर एति की जो एते एक्सटेंसिव लॉ मेकिंग थिला तांकर आ 200 वर्ष हमें तांकर अंडर रहिलु तो नेचुरली हमें तांको इंस्पायर्ड हबा तांको प्रेरित हबा सेटा गोटे नेचुरल जिंस आगे ना so that was one aspect why it is lengthy eta हम historical factor पढछु मन रखतो है ना सेकंड जिंस कोन other constitutions जो हमें inspired ए various sources टा भी इतरे ऐड कर दबा various sources है ना same जिंस so we were inspired by different constitutions तमरा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन नु नेइचो तमे कोन डीपीएसपीस होला आउ एग्जांपल्स को मते आउ को क्वेश्चन वेरी गुड कोन सेठी ताकू डका जाए ताकू कोन कुआ जाए सेठी हमर एटी फंडामेंटल राइट्स ताकू होउचे ताकू कोन कुआ होउची बिल ऑफ राइट्स हैला हमर जंती एटी फंडामेंटल राइट्स को होउची तांकर सेटा बिल ऑफ राइट्स को हैला हमर जोटा फंडामेंटल राइट्स तांकर सेटा बिल ऑफ राइट्स सेटा मु पचाल हैला सो यूएसए रो बिल ऑफ राइट्स inspired the fundamental rights chapter in India हैला यूएसए रो मेटा ने रशिया रु हमें कोन देलु हम प्रिएम्बल लो को कोन प्रिएम्बल ला जो वर्ड अछि justice word we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist democratic democratic republic हैला and to secure among its citizens liberty equality fraternity हैला equality just ये सॉरी कौन तक कौन थी हाँ सॉरी लिबर्टी justice liberty equality fraternity हैला so justice रे जो of social economic and political एटा कोठो हमें नहीं जो वर्ड था justice social economic and political from the USSR constitution सेतल तो रशिया नथिला सेतल USSR थे हैला सो USSR रो हमें जस्टिस नहीं लिबर्टी वर्ड ता जोटा अछि तमर लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप हैला जोटा हमर प्रिएम्बल अछि एटा कोठो नहीं छु फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन सो तमे एटा देखि परछो केते एग्जांपल्स हमें डिस्कस करले और भी बहुत अछि ऑफ कोर्स ए जो एग्जांपल्स पर हमें डिस्कस करले एटा हमें सब कोन नहीं छु हमें नहीं छु हम कॉन्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेट करिछु बट ब्लाइंडली कॉपी करनु सेटा हमर कंट्री को जेमिति जो भाबरे सूट करिवो से हिसाब रे ताको मॉडिफाई कराई कि हमर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट बनाई है ना सो बुझी परलो ए पार्ट ता आई होप समस्त बुझी परचंदी कार यदि क्वेश्चंस अछि प्लीज पचारिवो है ना सो हमें देखिले हमर इंस्पिरेशन is basically from two aspects गोटे है ब्रिटिश आ गोटे है अदर कॉन्स्टिट्यूशंस है ना so these contribute to the huge size of the तमरो constitution है ना
लास्ट जिनसटा कौन देखिए व्हाट इज द रीजन फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग लेंथी इट इज द डोमिनेंस ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स जेतोळे हमर ड्राफ्ट होतुला कॉन्स्टिट्यूशन सेतोळे ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन के थिले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वेरी गुड ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हला chairman and you had other members also अल्लड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर हला लेखि दोज खाली एमती किछि मने रखिया दरकार नहीं अल्लड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर ओके एटसेट्रा बहुत लोग थिले और 6 5 6 जण आउ डोंट नीड टू रिमेंबर दैट ओनली ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन मने रखिया हला सो एमाने सब जेति की मेंबर्स थिले दे वर ऑल लीगल एक्सपर्ट्स समस्त लॉयर्स थिले प्रोफिशिएंट लीगल ल्यूमिनरीज थिले तो नेचुरली तमे देखि तो लॉ बही गोटे खोलिबो कि पढिबो मोटा बहीटे थाए आ बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स थाए टेक्निकल लैंग्वेज थाए जहा पे आउरी लंबा हुए लेंथी तो दिस वाज आल्सो अ फैक्टर इन द एक्सटेंसिव लेंथ ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हला बेसिक जिंस बुझी परला एथरा व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज लेंथी तीनटा मेजर जिंस हम देखि देले geographical factors, historical factors, जो interpretation of the constitution no inspiration and dominance of legal experts. Okay, we move on to the next point. हम एटा ताऊ discuss करिया दरकार नहीं जो various sources वाला केना सही जिंस ही हमें जोटा हमें inspiration नहीं जो अलगा constitution नो same जिंस हला okay next बुझिबा amendability amendability माने कोन तमे जानि छ जो जिंस भी हमें करू सब बेले एकाथरे एका पार्ट रे करेक्ट न थाए भूल हुए हम तो नेचुरली देयर कुड बी प्रोविजंस वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जो माने कॉन्स्टिट्यूशन रो गठन करचंती फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी रॉन्ग हला आइदर दे कुड बी रॉन्ग और देयर कुड बी सिचुएशंस कॉन्स्टिट्यूशन केबे बनतिला 1949 आज केबे 2026 1949 रु 2026 सोसाइटी कौन सेमिति अछि सोसाइटी डिमांड सेमिति अछि चेंज हुए तमे तळे जाओ बुलिया पे तमे एठी ओडिसा रे अछ एठी गरम बहुत हला एठी तमे कोन तमे स्वेटर जैकेट एगुडा सब पिंदी तो बुलिबन ना तमे कोन करिवो तमे हाफ शर्ट स्लीवलेस जेमती जोटा माने गरम को जेमती आराम से कर परियो किंतु जेतोळे तमे जीवो शिमला तमे हाफ शर्ट भी नहीं जियो स्कर्ट भी नहीं जियो नहीं ना कौन हम तमे स्वेटर्स आउ हेवी वुलन अपैरल पिंदी की जीव ड्रेस पिंदी की जीव सिमिलरली तमर जेमिति सिचुएशन डिमांड करे से हिसाब रे हमको निजको बदलियार अछि तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी गोटे अमेंडेबिलिटी रो प्रोसीजर अछि अमेंडमेंट प्रोसीजर अछि अंडर आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोटा एई जिंसटा को रिकॉग्नाइज करे एई जो सत्यटा कोन कि हमको आम सिचुएशन हिसाब रे हमको निजको बदलिया पड़े तो सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन ना अमेंडमेंट प्रोसीजर ता सेटा को रिकॉग्नाइज करी कि हुए कि फ्रेमर्स माने तो 1949 ने जो जिंसटा बनेइथिले जो प्रोविजंस गुडा बनेइथिले दैट माइट नीड मॉडिफिकेशंस इन द फ्यूचर हैला तो जेतोळ तो मॉडिफाई करि परिबो सेतोळे नेचुरली सेतोळे कोन करथिले कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देइथिले तमे तो हिस्ट्री तो मॉडर्न हिस्ट्री पढिबो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस तो पढिबो सेतर कोन हला कश्मीर को हमको इंटीग्रेट करिया पई हमें ताको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करि देलु कि एटलीस्ट कश्मीर तो पार्ट हे जो कश्मीर कोन कहला ठीक अछि मु साइन करिबी किंतु तुमको हमको स्पेशल स्टेटस दबा को पड़े सेता सेतबळर सत्य 50 वर्ष हो गलानी ताको पई बजेट रे हमर एलोकेशन रहउची ताको लोको हम इंडिया भीतर आसी कोठी भी बेनिफिट्स पाई परिबे ताको भीतर अलगा कोन सिटीजंस को भीतर किछि डिफरेंस नाही तो व्हाई शुड देयर बी अ डिफरेंस बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर स्टेट्स कालिका डेट रे ओडिसा कहबो ये की कथा तमे ताको वीआईपी ट्रीटमेंट दोछ हमको भी दरकार हमको हमर निजर इंडियन पिनल कोड दरकार बहुत जिंस कहि थांते ताकर सेठी लोको लैंड परचेज करि परिबेनी जदी लोकल हे नथिबो ओडिसा रा काली लोको जदी कहि ताल तो केबे बड़ इंडस्ट्रीज केबे सेटअप ही परिबोनी वेदांत जदी सब अछि से माने एठी सेटअप करछन काई कि कांगे ताक पाखरे इंडिपेंडेंस अछि पैसा जदी देबे दे कैन परचेज लैंड एनी पर्सन तो खाली वेदांत कंपनीज हुए गोटे छोट लोक जदी के गुजरात रु भी अछि
सी आसिक जदि कहबो कि मु ओडिसा रे गोटे जगह किनिया पे चाहूछि किनि पारि बट कश्मीर से अलाउड नथिला तो ए जो वीआईपी ट्रीटमेंट थिला ताकू चेंज कला कि 2019 रे गवर्नमेंट चेंज कर देला सो एटा कोन हैला गोटे मॉडिफिकेशन हैला सो दिस मॉडिफिकेशन इज व्हाट इट इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो कॉन्स्टिट्यूशन ना गोटे इंपोर्टेंट फीचर इज दैट इट अलाउज फॉर इट्स अमेंडमेंट माने कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करूची कि हां मु भी भूल हेई पारे फ्यूचर रे जदी तमे मते चाहिबो मते अमेंड करि परिबो मते चेंज करि परिबो बट आमर अमेंडमेंट टा इज अमेंडमेंट तो हेई परिबो चेंज तो करि परिबो बट एते इजी की चेंज करिया एते इजी की इन सम सिचुएशंस यस इन सम सिचुएशंस नो है ना सो वी फॉलो amendment procedure टा हमर our amendment procedure is a synthesis it is a synthesis of flexibility and very good and rigidity है ना flexibility माने easy to amend करिबा change करिबा easy rigidity माने difficult to amend है ना आमर जदि सबु एमिति 2 सेकंड रे अमेंड हे ताता ताले जुडिशियल रो कुछ काम रही तांते जुडिशियल तो कहतांते कि अरे तमे तो सब कर दोछ मोर कोन दका मु तो इंटरप्रेट ही कर परिबि सेहित पई फ्लेक्सिबिलिटी रे कोन आमे तळे पढिबा यूनियन एंड द स्टेट्स यूनियन सॉरी स्टेट्स रो जतळे एरिया चेंज करियार थाए जतळे स्टेट्स रो एरिया अल्टरेशन करा जेमति तमे देखिथिबो 2000 रे कोन हला एमपी को भांगी की छत्तीसगढ़ कर देले बिहार को भांगी की झारखंड कर देले यू उत्तराखंड was carved out of उत्तर प्रदेश and most recently 2014 ने तमर कोन हेतले आंध्र प्रदेश was सॉरी आंध्र प्रदेश को कार्व करके तेलंगाना में ओके सो तेतरे कोन तांको पचरा हैला ना सेही पावर टा का को दिया इच सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट लॉ बनिया काम तो पार्लियामेंट रे ना तो पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक चेंजेस इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट टू क्रिएट अ स्टेट टू अल्टर अ स्टेट टू डिस्ट्रॉय अ स्टेट जतरा हमें पढिबा यूनियन एंड स्टेट सेतरा देखिया सो एटा कोन होची एटा आ पई कोन दरकार यू नीड अ सिंपल मेजॉरिटी माने 50% प्लस 1 आमे यदि 10 टा पिला अछु 6 टा पिला जदि वोट कर देले लॉ पास एग्जांपल दो नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की माने केते इजीली तमे अमेंड कर दो कॉन्स्टिट्यूशन नाउ रिजिडिटी रिजिडिटी कोन जोटा डिफिकल्ट टू अमेंड रिजिडिटी रे कोन एग्जांपल देखिया रिजिडिटी रो एग्जांपल देखिबा जेतबळे तमे गोटे फेडरल प्रोविजन चेंज करिया पे चाहिबो फंडामेंटल राइट्स हे गला किंबा सम फेडरल प्रोविजन जेमति यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट पढैतिली ता भीतर धरको यूनियन कहबो हमकू जो तमे नेइथला एग्रीकल्चर तमे हमू देई दियो हमू दरकार एग्रीकल्चर जो स्टेट कहबो ये की कथा आमे कहि दबु तबु तो एटा कोन एते एतरे यूनियन को सेमिते पावर्स मिलिनी एटा सेहि पई कॉन्स्टिट्यूशन कोन कहिछि सेंटर राइट्स को भी गोटे जगह सिक्योर करके रखिछि आ गोटे जगह स्टेट्स रो भी राइट्स को सिक्योर करछि स्टेट्स खाली गोटे मेयर पार्टिसिपेंट्स न होई कि रसत खाली एमती क्लास रे पार्टिसिपेट न करो क्लास रे इंटरेक्ट भी करिया दरकार हैला सो स्टेट्स को जतळे एमितिया प्रोविजन जतळे चेंजेस हबो द अमेंडमेंट प्रोसीजर इज वेरी डिफिकल्ट तो हमको कोन दरकार यू नीड अ स्पेशल मेजॉरिटी माने हैला 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग जो माने लोकसभा रे आउ राज्यसभा रे जेतिकटा मेंबर्स अछंती तार 2/3 मेंबर्स माने 66% तुमको दरकार लोकसभा रे चलो पास हेई भी गला राज्यसभा रे केमते हेइछो राज्यसभा रे तो पास होवा डिफिकल्ट ना कने सिटी ऑपोजिशन ना बेसी मेजॉरिटी अछि तुमको 2/3 मेजॉरिटी रे साइन करे अछि ये तो गोटे लोकसभा रे गोटे राज्यसभा रे हैला एटा अच्छा एठी सॉरी नी तापर कोन हबो तमरो जीवो स्टेट्स पकु एटा मु फेडरल प्रोविजंस कथा कहूछ हैला नॉट फॉर फंडामेंटल राइट्स स्टेट्स पाखु जीवो स्टेट्स रो भी मिनिमम 50% of the states have to approve माने तो भाबो केते डिफिकल्ट आगे तो तमरो 2/3 मेजॉरिटी दरकार लोकसभा रे
सेठी पास हैला परे 2/3 मेजॉरिटी दरकार राज्यसभा रे सेठी पास हैला परे स्टेट्स पाखु जीवो सब स्टेट्स हमर 28 टा स्टेट अछि सब स्टेट पाखु जीवो मिनिमम 15 टा स्टेट जतोळे अप्रूव करिवे ता पर जाई कि लॉ पास भाबो केते डिफिकल्ट कोउटी थिला 50% मेजॉरिटी खाली 10 टा पिला अछन 6 टा पिला दे देला सरला कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट इथि भाबो इथि आगे 2/3 मेंबर्स आगे साइन करिया आगे ये अप्रूव करिया दरकार गोटे हाउस रे सेकंड हाउस को बोले भी 2/3 मेंबर्स हाउस अप्रूव करिवे देन 50% स्टेट्स भी अप्रूव करिया दरकार ता पर जाई कि लॉ पास so it is a very difficult procedure तो बुझी पालो amendability हमें बुझिले केमिति how it is important for a constitution to change according to the needs and circumstances and the amendability that is amendment procedure that is followed in India that is defined by both flexibility it is a synthesis माने बुझছো तो माने mixture it is a mixture of flexibility as well as rigidity बुझी पड़छो तो ने डाउट्स किछि नाही तो ठीक अछि एगुड़ा एगुड़ा एई जिंस गुड़ा तमे जे जानिथिबो ना आगर जेतले जो चैप्टर्स गुड़ा पढिबो बहुत इजी हे जिवो एटा बुझिबो एटा हजार थर हमें आगु को ये रिवाइज करी एटा भाबियोनी गोटे थर पढाई गला माने सरी गला एटा हजार थर एई जिंस रिपीट हबो अलगा क्लासेस रे ए बेसिक जिंस गुड़ा जानि गले तमरा आ डाउट्स किछि रहइबो नै हैला नेक्स्ट देन हमर नेचर ता कोन वी हैव अ फेडरल सिस्टम though some say we have a quasi federal system देखियो आगे फेडरल सिस्टम ता कोन फेडरल माने हैला डिवीजन ऑफ पावर्स between center and states है ना फेडरल माने कोन डिवीजन ऑफ पावर्स between the center and the states जोटा मु तो कहितली स्टार्टिंग रे हमर कंट्री रो एटा पूरा यूनियन टा हला ता भीतर छोट छोट यूनिट्स भी अछन एगुडा सब मिसी कि सिना बनिछि हम इंडिया नले यार कोन अस्तित्व किछि अस्तित्व ही नहीं ना एटा गोटे ओडिसा गोटे कंट्री तांता वेस्ट बंगाल गोटे कंट्री तांता तेलंगाना गोटे कंट्री तांता एई सब छोट छोट यूनिट्स मिसी कि दे फॉर्म दिस एंटायर यूनियन तो हम कॉन्स्टिट्यूशन कोन कहला Constitution gave powers to both the center and the states. कौन आंक पावर डिफाइन हेची 7th शेड्यूल ले जोटी यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट आ गोटे को लिस्ट अछि गोटे गोटे कॉन्करेंट हैला कॉन्करेंट लिस्ट हमर मेंशन हेची यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स मु तुमको देइथिली एग्जांपल डिफेंस external affairs currency atomic energy हला एगुडा आउरी एग्जांपल्स अछि एगुडा पावर्स कार यूनियन एई सब्जेक्ट्स ऊपर लॉ की बनी परिबो खाली यूनियन बनी हला सिमिलरली स्टेट रो सब्जेक्ट्स कोन लैंड एग्रीकल्चर लॉ एंड ऑर्डर ओके आ ऊपर लॉज की बनी परिबो ओनली द स्टेट कैन मेक लॉज हैला कॉन्करेंट लिस्ट रे जो सब्जेक्ट्स अछि जेमति एजुकेशन फॉरेस्ट्स आ ऊपर लॉज की बनी परिबे बोथ द सेंटर एज वेल एज द स्टेट्स हैला तो हमर एई जो जिंसटा अछि अरेंजमेंट ता दैट इज अ फेडरल अरेंजमेंट जोतरे डिवीजन ऑफ पावर्स हेछि सेंटर को भी पावर्स मिलछि स्टेट्स को भी पावर सो वी हैव अ फेडरल पॉलिटी फेडरल सिस्टम हमर बुझिबो ना फेडरल सिस्टम बट मेनी पीपल आल्सो कॉल इट क्वासी फेडरल काई ना फेडरल प्रोविजन से ना अछि किंतु यूनियन को टिके बेसी पावर्स मिलछि हैला आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिटिल बायस्ड टुवर्ड्स द यूनियन को टिके बेसी पावर्स मिलछि जेमति एग्जांपल है इमरजेंसी खाली सेंटर माने पार्लियामेंट करि परिबो प्रेसिडेंट खाली प्रोक्लेम करि परिबो स्टेट रे गवर्नर की स्टेट रो करि परिबे ना बुझिबलो सो एटा हैला हमर फेडरल अरेंजमेंट हैला नेक्स्ट बुझि पाला समस्त तो एटा हां ओके
वन आवर है ना और एक्सटेंड मैंने वन आवर नहीं ना मैं एक्सटेंड और कर पारि किसी असुविधा नहीं मैंने तुम क्लास ये प्रॉब्लम नहीं तो अच्छा तो ठीक है ठीक है ओके सर जो आउ 10-15 मिनट से सर जाओ बुझी पारछ तो ठीक है ना ना माने मो एक्सटेंड करियर अछि माने कर खत्म एंड कर ठीक अछि ताले हमें नेक्स्ट क्लास रे विल कंटिन्यू with the other features हमें तो फॉर्म पर्यंत जाइछन we'll continue with the next class in the we'll continue with the other features in the next class है ना ठीक है क्लियर तो ओके थैंक यू सो मच थैंक यू